ओंटारियो सरकार ने 2008 तो बाद पहली बार एक बैलेंस्ड बजट पेश किया। 141 बिलियन डॉलर प्लान दे विच कोई सरप्लस ते कोई डेफिसिट नहीं है। इस नवे बजट का कॉर्नरस्टोन चिल्ड्रन एंड यूथ फार्मा केयर प्लान नूं मन्निया जा रहा है। इस 465 मिलियन डॉलर प्रोग्राम के अधीन 24 या उस तो हेठां उम्र के लोगों रही 4400 ड्रग्स कवर किए जाएंगे। इसलिए बीते दिन ओंटारियो लिबरल कॉक्स ने इस संबंधी प्रैस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया। ओंटारियो की प्रोविंशियल लिबरल सरकार वालों अपना सालाना बजट पेश किया गया है अते सूबा सरकार 2008 तो बाद पहली बारी संतुलित बजट पेश करने विच कामयाब रही। सरकार यह दावा कर रही है कि यह संतुलन 2020 दरमियान जारी रहेगा। पर जिथे तक कर्जे की गल है तो इस साल लई यह कर्जा 312 बिलियन डॉलर पेश किया गया है अते सरकार का कहना है कि कर्जे की चिंता करने वाली कोई गल नहीं है, यह जल्द सांभलिया जाएगा। बजट पेश करने तो बाद सूबा सरकार वालों एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई जिस विच पत्रकारों वालों पूछे गए सवालों का जवाब भी दिता गया। My question is about auto insurance rates because I think that's the issue which is not being addressed in the Ontario budget. Ontario is the only province which has the highest auto insurance rates. And my second question is how the government will manage the Ontario's net debt, which is $312 billion. So the auto insurance, it's something that we've been trying to curb for some time. In fact, Amit Mangat in a private member's bill had initiated some measures for us to try to temper some of those costs. It's all about trying to go after the cost of those claims. And we recognize that in Ontario, it's much more expensive than it is, not the premium, just the cost of supporting the accident and the victims. And that's been almost 10 times more expensive than it is in Alberta, for example. Now, we made a commitment to reduce those premiums by about 15%. There are over 100 companies that compete in Ontario with auto insurance. About 20 to 25 of them have already reduced their rates by 15%. The question still is, how do we continue to get the whole of the industry to be more competitive? So we have worked with David Marshall, who worked with me when I was Minister of Labour at the WSIB. He's brought forward additional measures to provide care as opposed to cash, to ensure that the victims are served more quickly and more expediently, and they get the value of the settlements. In often cases, there's delays and there's a lot of legals and there's clinics, there's fraud in the system too. So all of that is being addressed in the new measures that we're putting forward to further reduce those costs, thereby reducing those premiums. We're also giving our regulator more strength to encourage those insurance companies to follow suit. And the debt, in terms of the debt, I talked about the debt to GDP. We're in a much better position. The first step of dealing with the debt is to balance the budget. We've done that, and as I said, we are seeing our debt to GDP go down, going in the right direction. बेशक ओंटारियो लिबरल सरकार ने अपने बजट दे विच नौजवानों ਲਈ फार्मा केयर, चाइल्ड केयर स्पेस, सीनियर्स ਲਈ मदद ਅਤੇ एंटी रेसिज्म प्रोग्राम सने कई अहम ऐलान किए हैं। ਉੱਥੇ ही विरोधी पार्टी के आगुआ का कहना है कि इस लिबरल बजट दे विच कर्जे नूं नियंत्रित करने ਲਈ कोई योजना नहीं है। ओंटारियो सरकार वालों इस साल एक बैलेंस बजट प्रेजेंट किया गया है। इस बजट दे विच चिल्ड्रन एंड यूथ फार्मा केयर, अफोर्डेबल एंड लाइसेंस्ड चाइल्ड केयर, फ्री ट्यूशन फीस और हाइड्रो कट सने कई अहम ऐलान किए गए हैं। पर फिर भी इस बजट नूं किते ना किते अपकमिंग इलैक्शनस दे नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। आने वाले समय दे विच यह वेखना दिलचस्प होगा कि इस बजट दे विच किए गए अहम ऐलान सरकार नूं कितना कुछ फायदा करनगे। कैमरा पर्सन संदीप सोनी के नाल जसलीन कालरा, PTC न्यूज़, मिसिसागा, कैनेडा।